titrations. Already told you that titrations can be taken by nature. By nature they can be taken 3 types of titrations, but in exam you get question commonly on 2 types of titrations. One of them are called as acid based titrations and others called as redox titrations. पहले क्या होता है acid based titrations, अगले क्या होता है redox titrations. कैसे? It depend on the reaction's nature. If one compound is acid, other is base, then it can be taken as acid based titrations. If one is oxidizing agent, second is reducing agent, then we can call them redox titrations. In titrations, what we involve solutions. तो write the definition of titration. Write down, लिख लीजिए आप लोग definition. Titration का होता है क्या titrations? देखिए, it is a method of determination of concentration. It can be taken normality, molarity or strength in gram per liter. Normality, molarity or strength in gram per liter. It is method of determination of concentration of an unknown solution. Concentration of an unknown solution by reacting it with a solution of known concentration. It is called what here? It is called as standard solution. The solution for which we know concentration called as standard solution of known concentration in presence of, आगे लिखिए, इसका तो ब्रैकेट में लिख लीजिए इसमें, standard solution in presence of suitable indicator. We add 1-2 drop indicator only in titrations based questions in presence of suitable indicator. Now to explain this titration, we are explaining this with example. Titration में सब में एक basic approach common होता है. जैसे आप प्रैक्टिकल में नॉर्मली करेंगे इस टॉपिक को, you do this practice in the laboratory of titrations. So how you do practicals in laboratory conditions? Okay, there are given 2 solutions. For one solution, concentration is known to us. That solution is called as standard solution. For second solution, concentration is required. आपको दिए मिलेगा नहीं, आपको निकालना पड़ता है. Concentration can be taken as normality, molarity or strength in gram per liter. On these 3 ways commonly. Now to explain this titrations, I will take example of titration of potassium permanganate versus oxalic acid H2C2O4. We did titration of solution of KMnO4 versus H2C2O4 called as oxalic acid. In this case, they will have a redox reaction. Now, in this case, for solution of KMnO4, concentration suppose given is N1, normality is given to us. The solution for which normality is given, this solution is called as standard solution, and it is taken in burette. I'll explain the burette. And this solution for which concentration N2 आपको नहीं दिया है, आपको निकालना है. This solution is called as unknown solution. The solution for which concentration आपको नहीं दिया होता है, उसे होता है unknown solution.
unknown solution. Remember, unknown solution does not mean that compound's name is not known to us. Not that way. Unknown solution is compound का strength आपको unknown होता है. ये नहीं कि compound ही पता नहीं क्या है, ऐसा नहीं होता है. Unknown solution का meaning होता है उसका strength, normality या molarity कितना है, ये आपको पता नहीं होता है. तो हम कैसे करें titration आते हैं? In titrations, we will take a long tube called as burette. In this long tube burette, it has a knob to control the flow of solution. It is called burette stand. Clamp is there to hold the burette. It is called burette stand. This, and they hold by the clamp. They will hold the burette. Now in the burette, this is called as burette. In the burette, we take the solution of non-concentration. It have concave surface. Solution of KMnO4 is taken. We take solution of KMnO4. The solution for this normality is N1 given to us. So it is a common procedure. If the solution for which concentration is given to us, normality is given to us, is called as standard solution, and it is taken in the burette. This long tube, it have length. We have different size burette. Common taken is 50 ml capacity of burette, or sometimes 30-40 ml can also be taken, but common is 50 ml. Standard burette taken of 50 ml capacity. This burette is taken filled with the solution of non-concentration. Normally, the solution of KMnO4 we have to prepare ourselves. Practically क्या होता है normally sometimes to avoid wastage of chemical or to save time, this solution is given to you ready-made. The solution is given to ready-made, but not always. What is the actual procedure? कि आपको ये solution खुद बनाना चाहिए. ये solution बच्चों को खुद बनाना चाहिए होता है. But normally वही होता है कि lab के अंदर time save करने के लिए या और chemicals को save करने के लिए they prepare solution and give the chemical or solution to the students ready-made. आप क्या करते हैं? आप 2 beaker ले लेते हैं. In 1 beaker you bring solution of this, and second beaker you bring solution of unknown solution. Come back to your seat and start the titration. ऐसे आप करते हैं प्रैक्टिकल्स में, जो आपने किए होंगे. अगर आपने कुछ अभी स्टार्ट किया हुआ है, करे होंगे प्रैक्टिकल्स पहले, तो ये इसका अप्रोच होता है. अदरवाइज क्या होता है कि ये आपको सोल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ता है कि आपको सोल्यूशन रिक्वायर्ड है, नॉर्मलिटी गिवन, तो जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा आपको बना सकते हैं. कैसे? जो आपको नॉर्मलिटी रिक्वायर्ड है उसका सोल्यूशन के अकॉर्डिंग कितना वेट आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा by equivalent weight of solution of KMnO4 into volume in liters. If volume taken ml, तो take 1000. अगर ये आपको सोल्यूशन बनाना पड़ेगा तो उसके लिए if the volume is taken milliliter, suppose this titration done in acidic medium, already we have acidic medium, this titration to be done in acidic medium. Suppose solution required of normality 1/30, volume of solution required to be suppose taken 100 ml, इतना आपको required है. तो how much is the equivalent weight of KMnO4? It is molar weight 158 by n factor 5. That is how much? 31.6. ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर लिखा है एसिडिक मीडियम. I told you this reaction is very important. Reactions of potassium permanganate acting as oxidizing agent is very important. तो इस सोल्यूशन को आपका वॉल्यूम रिक्वायर्ड था 100 ml. सपोज कि जो एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है, इस सोल्यूशन का वॉल्यूम आपको ये सोल्यूशन आपको बनाना चाहिए खुद ही. तो कैसे बनाएगा सोल्यूशन? तो सपोज वी रिक्वायर सोल्यूशन वॉल्यूम 100 ml. ये हमारा रिक्वायरमेंट है कि वी नीड सोल्यूशन वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज 100 ml. Then to prepare solution volume 100 ml, how much weight is to be dissolved? It depends on normality.
Suppose normality solution required is 1/30, maybe 1/10, 1/20, different capacity, but to suppose required solution normality 1/30. ये हमारा पहला एम होता है, टारगेट क्या होता है? पहला टारगेट टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस स्टैंडर्डाइजेशन, इसका प्रिपरेशन। तो कैसे करेंगे प्रिपरेशन? आपका सपोज वॉल्यूम रिक्वायर्ड है आपको 100 ml, इसका नॉर्मेलिटी लिया हमने 1/30, तो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? मोलर वेट ऑफ KMnO4 इज हाउ मच? 158 by 5 is n factor value, that is equivalent weight of KMnO4 इस सॉल्यूशन के लिए। तो हाउ मच वेट आपको डिसॉल्व करना है, फर्स्ट यू कैलकुलेट थियोरेटिकली एंड देन यू डू प्रैक्टिकली वेट मेजरमेंट यूजिंग फिजिकल बैलेंस। आपका कितना वेट रिकॉर्ड होगा, आप उस वेट को पहले मेजर कर लेते हैं, उस वेट को आप ले आएंगे, देन वी टेक वन मेजरिंग फ्लास्क, they have this kind of measuring flask, it is we fill the powder here of KMnO4 powder, plus we add 2-3 ml solution of acetic acid dilute solution and then water and fill up to the mark. This solution is prepared, how it is preparation is I have shown to you कि आपको इतना वेट हमने निकालेंगे, जितना भी वेट आपको चाहिए आप उतना वेट को मेजर कर लेंगे यूजिंग फिजिकल बैलेंस, उसको इसमें डाल देंगे। दिस फ्लास्क इज कॉल्ड एज मेजरिंग फ्लास्क, दिस फ्लास्क इज कॉल्ड एज मेजरिंग फ्लास्क। आप उसको उसमें डाल देंगे पहले वेट को, जितना आपने निकाला इस स्ट्रेंथ के लिए। एड 2-3 ml solution of acetic acid, add water to fill the level up to this mark, solution is ready. That solution taken in the burette। सारे पॉइंट पे लिंक इसमें। अब अगला पॉइंट आते हैं अननोन सॉल्यूशन के ऊपर। नाउ लेट्स वी कम ऑन द अननोन सॉल्यूशन। नाउ अननोन सॉल्यूशन वी आर टेकिंग, वी टेक अ फिक्स्ड वॉल्यूम, सपोज वी टेक फिक्स्ड वॉल्यूम, टेक फिक्स्ड वॉल्यूम यूजिंग pipette of a definite capacity. Pipette again can have this glass tube is taken pipette, it are marked to here. So again they can have different capacity of pipettes like 10 ml, 20 ml, 30 ml pipette size can be there, different size pipette are available. So we take a definite volume of solution. Suppose we take solution volume taken suppose 20 ml. This volume can be taken V2. This volume is known to us. Using pipette, the solution we are sucking from the unknown stock solution. You can use plastic pipe also for this solution to take out, and then this solution is put in the conical flask. It is taken one conical flask. Shape this conical flask is called as conical flask. We take definite volume, it's a volume V2. Then we need to add some indicator. In this titration we don't require indicator. When we take titrations involving potassium permanganate or potassium dichromate, we don't require indicator. What are indicators? होते क्या indicators हैं? Indicator can be taken substance which can show color change. We may have possibilities like color may appear or color may disappear, or if you have one color it can become second color. Color can change. There are 3 possibilities to indicate कि reaction is over. What is indicator? They indicate कि हाँ reaction आपका रुक चुका है, खत्म हो चुका है, now stop. They indicate reactions end, कि हाँ आपका reaction अब खत्म हो चुका है, stop. That is indicator. How they indicate? Solution में क्या हुआ? 3 possibilities. Color may appear, or if it is already colored, then color may disappear, or if there is one color, suppose color A will change to color B,
There are three possibilities using indicators that in solution color may appear or color may disappear or color will change from one to second color. So it is the basic procedure कि हमारा क्या था डेफिनेशन टाइट्रेशन का. इट इज ए मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन by titrating or reacting it with a solution of non concentration. Solution for which concentration is known to us is called as standard solution. This solution taken in the burette as a common rule, and other solution for which normality or molality is unknown to us, we take a fixed volume using pipette in the conical flask. This solution is normally prepared by the student. It should be done practicals. बच्चे को खुद करना चाहिए कि कितना वॉल्यूम का रिक्वायर्ड था. सपोज हमारा वॉल्यूम रिक्वायर्ड है इसका 100 ml. इतना वॉल्यूम बनाने के लिए कितना वेट आप मेजर करेंगे. दैट वेट इज मेजर्ड यूजिंग फिजिकल बैलेंस एंड इन द लैबोरेटरी, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट वेट मींस एज पर नॉर्मलिटी कितना वेट आपको चाहिए होगा फॉर पोटेशियम पर मैग्नेट. योर इक्विवेलेंट वेट कितना होगा मोलर वेट बाय एन फैक्टर. बिकॉज यहां पे हम लेंगे एसिडिक मीडियम टाइट्रेशन में. In acidic medium for potassium permanganate कितना होगा फैक्टर वैल्यू 5. What is molar weight of KMnO4? 158. K का होता है 39, potassium 55 plus 64. Add all this, it is 158. So compound potassium permanganate of equivalent weight 31.6. Equivalent weight is known to us. Volume कितना चाहिए ml में लिख लिया हमने. कितना नॉर्मलिटी रिक्वायर्ड है इतना. इसके अकॉर्डिंग वेट कितना होगा आप वेट को नाप लेते हैं. पुट इन द conical flask. First add 2-3 ml solution of acetic acid, then fill by water up to the given mark. That solution is prepared. This one. This solution is given ready-made unknown solution जिसका strength unknown है. We take definite volume in the conical flask. In same flask we should add indicator 1-2 drop. But in this titration आपको रिक्वायरमेंट नहीं है. क्यों नहीं रिक्वायरमेंट है? बिकॉज सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट है पर्पल कलर. द कलर्ड सॉल्यूशंस themselves will act as indicators because when reaction will get over this color will appear in the conical flask. So this color will appear means reaction is over, you have to stop. Okay, now let us take the procedure how this reaction will happen. Okay, let's continue. This solution normality is N1 given to us. इसका normality N2 आपको निकालना है. इसका वॉल्यूम हमने ले लिया फिक्स वॉल्यूम यूजिंग पिपेट. वॉल्यूम V2 is known to us. इसका N2 normality आपको अननोन है. इसका वॉल्यूम कितना होगा आप निकाल पाएंगे रीडिंग करने पर. देखिए पहले क्या होता है. लेट अस टेक रिएक्शन. इन द बिगिनिंग रिएक्शन स्टार्ट KMnO4 plus oxalic acid, already acidic medium is there. They give manganese +2 state plus CO2. CO2 normally escape out. This reaction will start. We have a redox titration. Reaction gas में है redox reaction. So titration of solutions involving oxidizing agent and reducing agent is called as redox titration. Now what happened in the beginning? This solution has purple color. When you put in solution here, its color disappears. यहाँ पे क्या हुआ? Solution is colorless. This solution of H2C2O4 is colorless. This solution color will disappear. The color will disappear of solution of KMnO4 on adding to this. Actually, what happened in the beginning? Initially, KMnO4 will act as limiting reagent. आपका इसका वॉल्यूम था सपोज इसका वॉल्यूम है 20 ml. ये हमने ऐड किया 1 drop 2 drop 1 ml 2 ml. So in the beginning this solution is in excess. KMnO4 will act as limiting reagent, so its color will disappear. This solution is colorless. Solution of Mn+2 become colorless. So color will disappear in the beginning. Now what happens? You will observe. आप ये प्रैक्टिकल करते भी आपके सिलेबस के अंदर भी है. प्रैक्टिकल सिलेबस के अंदर कि इन द बिगिनिंग आपने सॉल्यूशन डाला स्टार्टिंग में एंड द कलर विल डिसअपीयर इंस्टेंटली. आपने डाला, डालते ही कलर आपका क्या हुआ? कलर गायब, जादू. ओके, बट स्लोली व्हेन द रिएक्शन रीच
close to the end of the reaction, it will take some time. It will take some more time for color to disappear. It will take some more time for color to disappear on adding in solution of oxalic acid. क्यों? Because when time will go on passing, concentration keep on decreasing, so rate of reaction also keep on decreasing. In the beginning क्या होता है, concentration ज़्यादा होता है इस compounds का, reaction क्या होगा, fast होता है, but इसका amount कम हो जाएगा, तो क्या होगा, rate of reaction also slows down with time. So anyway, when it will take some time more for color to disappear, then add solution carefully. Add 1 drop, shake solution for some time. Shake solution for some time, wait for some time. If the color disappear, add 1 drop more. Means you do this way close to the end point. Then one term is coming here, end point or equivalence point. End point or equivalence point. Equivalence point. इसका मीनिंग क्या होता है? Solution probability N1 volume V1, it have probability N2 volume V2, they become equal. End point का मीनिंग क्या होता है? At end point, two solutions will have same number of gram equivalents. Gram equivalence point. If two solutions have same number of gram equivalent is called as equivalence point. N1 V1 for one solution. आपको N1 given था. How to find N2? From reading in burette. Suppose up to here volume has been consumed. You can note from burette reading. This volume taken V1. कि आपका जब solution में color क्या होगा? Color will just disappear. For confirmation, you can add 1 drop more. The color in the flask should be as faint as possible. जितना कलर आपका लाइट होगा उतना परफेक्ट आंसर आएगा इसमें. फिर सपोज बाय मिस्टेक you just कंट्रोल नहीं कर पाए, एक्स्ट्रा सोल्यूशन फेल, कलर बिकम ब्राइट. डोंट थिंक रीडिंग इज now more accurate or sir or madam will be happy. No. If you have color darker, that means it is wrong reading. क्यों? हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, इसका रिएक्शन तो होगा नहीं. Actually, what happened after end point? What happened after end point or equivalence point? This we are adding extra. This become excess. It become limiting reagent. It is already consumed. So when we add extra amount which is not reacting, so what happened? आपको aim क्या है? N2 निकालना. आपका aim क्या है? N2 निकालना. We are adding that volume which is not reacting. So what will happen? We get the wrong reading. We will get the wrong reading in titration. So we said कि near the end point we must add solution of KMnO4 very slowly. एक कप ड्रॉप ऐड करेंगे. Wait for some time. Shake solution for some time. Wait for some time. Then only if color disappear, you add 1 extra drop. तो आपको थोड़ा पेशेंस रख के प्रैक्टिकल करना पड़ेगा इसमें. ओके, तो ये हमारा एक्सप्रेशन है इसमें एंड पॉइंट पर. बट फॉर कंफर्मेशन स्टिल आपका वॉल्यूम क्या था? V1 हमने निकाल लिया. ऑलरेडी N1 is given to us. वॉल्यूम V2 हम टेकन फिक्स वॉल्यूम यूजिंग पिपेट. तो क्या अननोन है इसमें? N2. तो इन दिस एक्सप्रेशन वी नो एवरीथिंग लिविंग N2. वी कैन फाइंड आउट वन थिंग मोर फॉर कंफर्मेशन कि हाँ हमारा ये जो वॉल्यूम निकला V1 वो करेक्ट है कि नहीं है. वी रिपीट टाइट्रेशन एटलीस्ट 3 times. दैट इज द कॉमन स्टैंडर्ड प्रोसीजर. वी शुड रिपीट टाइट्रेशन एटलीस्ट 3 times. नहीं, 2 बार तो करना कंपलसरी है. अगर आपका दोनों बार में रीडिंग परफेक्ट आ रहा है, एक्यूरेट आ रहा है, सेम आ रहा है, मींस इट इज करेक्ट. अगर सेम नहीं आ रहा है, 1 more रीडिंग. सपोज इन वन केस वॉल्यूम कमिंग 15.6 ml. In second case volume comes 15.7 and again it is 15.5. not a mean value. अगर आपके 3 रीडिंग डिफरेंट आएंगे 15.5, 15.6, 15.7, आप कह रहे हैं मिडल वैल्यू, मीन वैल्यू, एवरेज टू बी टेकन इन दैट टाइट्रेशंस. अगर तीनों सेम आ रहा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको. दैट इज आंसर V1
दैट इज अ वॉल्यूम मेजरमेंट. आफ्टर वॉल्यूम एक्यूरेट कैलकुलेशन हम निकालेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन N2 निकालेंगे. आफ्टर N2 after calculation of normality N2, they sometimes asking question to find the strength in gram per liter. Strength in gram per liter कितना आता है? नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट. The strength in gram per liter can be taken normality into equivalent weight. Equivalent solution volume is 1 liter. Then what is number of gram equivalent? Same as normality. If the volume is 1 liter, then what is normality? Same as number of gram equivalents. So number of gram equivalent into equivalent weight become the weight of solute in 1 liter. The weight of solute in 1 liter is called as strength of solution in gram per liter. तो in titration की practical part आपको ये निकालना पड़ता है strength in gram per liter. तो आपको normality to equivalent weight आप निकालने के इस बार निकाल पाएंगे इसका आंसर. What is equivalent weight of this compound taken? Oxalic acid from redox reaction. इससे कितना आएगा? फैक्टर वैल्यू यहाँ पे 2 आएगा. आप देख लीजिए कार्बन है ऑक्सीडेशन नंबर +3. So this compound has N factor value 2. We call it redox reaction. So if you require equivalent weight is how much? Molar weight by 2. It is one of the very common titration they ask in examinations in practicals and also entrance. Titration involving solution of potassium permanganate with other different substances. And it is a commonly done practicals in exam in your lab by the students. यहाँ पे क्या हुआ? एक चीज और फिर से देखिए. This solution KMnO4 will act as self indicator. So in this titration we don't require indicator, but otherwise in titrations when both solutions are colorless we cannot know when the reaction get over. So in that kind of case we add in conical flask suitable indicator, just 1 drop, not extra, because indicators themselves can consume some reactant or product. So it is the basic idea of titrations कि आपके दो solutions दिए होते हैं, एक का strength पता होता है, strength means normality या molarity पता होता है, एक का normality या मोलरिटी या स्ट्रेंथ पता होता है, एक का निकालना होता है. इसका निकालना है उसको बोलते हैं अननोन सॉल्यूशन, जिसका दिया है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिसको दिया है उसको लेते हैं ब्यूरेट में, जिसका नहीं पता उसको लेते हैं कॉन्वो फ्लास्क में. वी ऐड इंडिकेटर 1 ड्रॉप एंड देन रिएक्शन डन. स्टार्टिंग में the solution will act as limiting reagent and after reaction at over this become excess, this become limiting reagent. तो concept of limiting reagent is very useful कि just when reaction is over आपको उस टाइम पे टाइट्रेशन को स्टॉप करना चाहिए. फिर आप करेंगे नोट ब्यूरेट रीडिंग, कितना वॉल्यूम कंज्यूम होगा सॉल्यूशन में, कितना वॉल्यूम कंज्यूम होता है आपको रीडिंग नोट कर लेते हैं. उस वॉल्यूम को आप टाइट्रेशन यूज करेंगे कैलकुलेशंस के लिए. N1 दिया था आपको ऑलरेडी, V1 हमने एस्टिमेट किया ब्यूरेट रीडिंग से, N2 आपको निकालना था. अगर V2 पता है पहले से, कैसे पता होता है? यूजिंग पिपेट. यूजिंग पिपेट ऑफ डिफरेंट साइज वॉल्यूम V2 विल बी नोन टू अस. सो व्हाट इज अननोन? N2 निकल जाएगा. फिर आपको आपका निकालना स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, वो भी निकल जाएगा उसके बाद यहां से. समझ में आया? सो इन टाइट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस we are applying what law of gram equivalents. Since solutions you have discussed earlier, what is normality, number of gram equivalents of solute by the volume of solution in liters. So from here you can see what is number of gram equivalents of solute. It is normality into volume of solution in liters. So when we take an endpoint or add endpoint in titrations, the two solutions are having same number of gram equivalents. That is
N1V1 at end point or equivalence point, we write right now an expression that two solutions are having same number of gram equivalents. That is, if you take two solutions, solution A and solution B, it have normality into volume N1V1, it have normality into volume N2V2. So what we write here, that gram equivalent of A shall be equal to gram equivalents of B. That is, N1V1 is equal to N2V2. It is also one application. It is also one application of law of gram equivalents. It is also one application of law of gram equivalents. क्या बोलते हैं law of gram equivalents में? Two compound have same number of gram equivalents. In reaction of solutions, two solutions are having same number of gram equivalents. N1V1 is equal to N2V2. Two solutions have same number of gram equivalent. N1V1 is equal to N2V2. It is as per the law of gram equivalents only. So we can take calculation of gram equivalents in different terms: weight upon equivalent weight, number of moles into n factor, or n into V. If normality is not given to us, we are given molarity. We can get normality. How? Relation क्या होता है normality का? Normality is equal to molarity into n factor. Molarity into n factor will be normality of solution. So you can see the applications of n factor values or law of gram equivalents in titration test questions. Again, the solutions are having same number of gram equivalents. In solution, how to find number of gram equivalents? Normality of solution into volume in liters. Volume in liters. Now, one thing more. If in any solutions, when we take calculation of number of, one term is more introduced here, number of milli equivalents. Number of milli equivalents. Milli equivalents. MEQ. ये क्या होता है? Normality into volume in milliliters. In question this term is also used commonly, especially if in solutions when they are given small amounts, like in milliliters type questions. So in that kind of cases we can use term milli equivalents. दोनों में रिलेशन क्या है? If volume is liters तो gram equivalents, if volume is ml तो it is milli equivalents. When we take volume in milliliter, the term become milli equivalents. If you take volume in liter, the term become gram equivalents. n दोनों में कॉमन रहता है, ठीक है? If we should have both volumes in same units, either both liters or both milliliters. If you take both liter, the term is gram equivalents. If you take both volumes in milliliter, the term is milli equivalents. समझ में आया पॉइंट? ओके. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए आपने, दोनों में रिलेशन क्या है? रिलेशन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एंड मिली इक्विवेलेंट्स. वी कैन राइट फ्रॉम हियर. Number of milli equivalents is equal to number of gram equivalents into 1000. दोनों रिलेशन है. नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स में नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इनटू 1000. तो व्हाट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स? इट इज मिली इक्विवेलेंट बाय 1000. व्हाट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स? इट इज नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स by 1000. दोनों का रिलेशन ये वाला है. Okay, so that is some basic idea of titrations. Now titrations can be taken different types. Let us come